Namaste once again to all of you in the moJOsh Magnificent 7 Women Heroes on International Women's Day. And namaste once again to everybody who's joined us on Facebook Live as our participants and in the audience. We had a technical snag and got logged out. So we're going to start with our third hero, Dania Ravi's story once again. Over to you, Dania. Thank you so much. Thank you so much, Jerry and Itu. I think barriers and challenges is part of everyone's life, and it's always about how we go through it. I was just saying that implicit bias turns out to be a stereotypical assumption that we hold unconsciously. And I believe this limits us while connecting with others or shaping our own life and even organizational structure. Leadership plays a huge role in building a community. The leadership first starts within ourselves, how we build our own identity, and then to the community level. Many companies have rejected me because I do not hold many academic certificates. Though I lack credentials, I have picked up certain skills and specific areas where I'm gifted. If I ignored my pain or if I had gone with the beliefs of what other people told me, I would have never loved my life as much as I do now. My fractured struggle towards education, being in the mainstream workplace, and self-love made my journey more compelling. Life taught me that when we are in a deep struggle, what matters is a willingness to move on and trust our own journey. And that is making us a star. There is a constant battle of ups and downs I go through, no matter what area in life it is. But being life with possibilities is a way to success. I'm sure most of us today, in our own way, we are going through some set of conflict, personal and professional. But as I mentioned, I feel what makes us unique is when we have the willingness to go out of a comfort zone. Believing in our potential, being part of the revolution as a transformation we bring in personal and professional life. Humans have got a boon that we can overcome any situation. I would personally say women's as also. But how, whatever the gender may be, I really believe how we deal with each situation matters a lot. The takeaway of my journey taught me that either this different mechanism helps us filter our purpose or challenge assumption. It's effortless to let the beliefs of others soak into our minds, leaving us to think we are just not worthy. Suppose we challenge ourselves in the uncertainty. It helps us to be on track and nurtures our personal life with liberation. And that's how I kind of travel my journey from my childhood until all those years. On a positive note, this is also a reminder that there is a solution for every problem. We just have to be open to receiving and to work on it. Today, if I am sharing my life experience, it is to create an inclusive and rare disease-free India. I'm vulnerable in the community because I do not wish others to go through the same stigma of what I went through. This determination proved that volunteering could change lives. This act of choices by others helps persons with disability gain confidence by trying something new and building a real sense of accomplishment. Apart from spreading awareness, when I started to be part of community friends, I experienced a positive socialization beyond limitation. Today, I have a story to share and discuss how inclusion has changed my life and the community. It is because I came across people who aren't like themselves. After all, everyone has some set of disability. Only when we experience humanity to a certain level of not branding each person with different degrees and abilities, we perceive chances of inclusion. All of us have some role and specific skills to contribute. Only self-reflection can help identify and extract the best from each individual. I hope we collectively join hands and complement each other. Let us make each moment beautiful and spread love. Only teamwork can make a significant difference. Together, let's celebrate lives
raise awareness against bias, and take action for equality. On this Women's Day, I like to wish all the men out there, but spreading lots of love to all of you for loving the woman in your journey the way how you love yourself. And a very happy International Women's Day to all the women out here. Let's cherish our life. Thank you. Thank you so much, Dhanya, and that was very inspiring. And to be able to walk through your story and to be able to celebrate yourself the way God has baked you. And I was just saying, imperfectly perfect. Each one of us is imperfectly perfect, and that's the beauty. And to that, I really wanted to dedicate some more poems today to all of you, and to you all. There's another poem that is called Imperfectly Perfect, and it says, I have begun to appreciate beauty of imperfection in life. That's how the allure of this world is to be experienced. We do not fathom this enchanting puzzle till we have walked a million miles. That those miles are experiences. Perfection is a farce that we weigh upon ourselves and underestimate the given life. The appeal is in the imperfect art. The grandeur is hidden behind the dark. And look at the beauty and the grandeur that is hidden behind every story that we're listening in. And we at Rex Karamveer say that when we celebrate our vulnerability is a trigger and a power that unleashes the potential, the heroic potential, that innate heroic potential that each one of us has. And that's exactly what is coming out from each story to inspire the world to never give up and never underestimate the power of human being, and never ever the power of a woman. On that note, we move on to our next speaker. That's Meena Gupta. So over to you, Meena ji, to inspire us and tell us more about your life. Thank you. Thank you, everybody. Hello, everyone. It is my honor to be here on Women's Day and share with you a glimpse of my life and my journey. I'm Meena Gupta, as Itu has said, and I've gone through a journey of breaking gender barriers. That is what I'm going to talk about, to finally what I am today. That is, I'm a counselor, therapist, and a trainer, and also the president of Society for Complementary Therapies. But before I go on the journey, I wish to say, I did not choose mental health. It chose me. Now, to start with my journey, 40 years back, as a young married girl of 21 years, after 3 children and a roller coaster ride in a conventional but educated family, I found my calling in the field of mental health. But there is a story behind it, a tragedy of life that led to this finding. 40 years ago, there was a beautiful person in my family who was diagnosed late with a mental health concern known as schizophrenia. She received the best of aid, but unfortunately, no avail and no recovery. Being grasped from the struggle inside, she chose to end her life. That was the day I lost someone I held dear to my heart and journey, and was devastated that in spite of convincing her and making her see sense in restoring some kind of a balance in her life, we failed. And in that failing, I felt I failed. Little did we know that there was an invisible wall she was struggling through, a mental health barrier, a struggle that we were having a hard time to understand and for her to live with. Now, my friends, it was with her life and her death that I started my journey into making a difference in mental health. This devastation strengthened my commitment, and I was led to the world of the Samaritans, which are the suicide prevention center all over the world, who trained and sensitized me into this journey.
But friends, I can tell you, it has not been easy. Now I come to breaking the barriers, which I said was my topic for today. Breaking the barriers was a task. In my generation, I faced several pressures. They were verbal and non-verbal that I had to endure. Women in my family had never stepped out, even though they had the freedom that fit in the definition back then. But my definition was a little more. I faced a lot of resistance from my husband and his family initially, who did not understand the empowerment I was asking for. Everything was questioned. How will you travel 10 kilometers in a public transport? You will do social work? How can you work when there is no monetary gain? How can we let you work? Other women in the family will also want to step out of home. Then how will you manage work in home? It was also said that women don't work in our family, so how can you? I had to constantly advocate and sensitize my loving yet conventional family. It was bound to happen, my friends, as the cause was so new to them. It was a change they were having a hard time adopting to. So, of course, to break the barriers at home itself was a Herculean task. Today, I can say that. Women of today face that challenge, but thanks to the effort from previous generations like me, I find today's women more benevolent, voicing their opinions comfortably, and have become the leaders of the modern world. But my friends, this was possible only because of the trailblazers of yesteryears who fought through many restrictions like I did. A patriarchal world it can be, isn't it? I'm sure all of you would voice their opinion on this. As a homemaker, I had limited freedom to make the decisions. But, my friends, I was strong. I was near stubborn and deeply inflexible. I had to ensure my daughters are brought up in an environment of empowerment, high education, and the ability to make their own decisions with equal choice and freedom. My friends, this was not easy, but it was deeply gratifying. This passion, purpose, and need to go out to the world and make a difference led my determination to make a difference in mental health. I wanted to save others from the trauma that was inflicted on my family. So I started my journey to go out of bounds of home, fought for myself. But my friends, in due time, my husband recognized and appreciated my desire to reach out to the people who were facing mental health crisis. He had to succumb, realizing that there was no stopping me. And with this, my journey took a new turn. I stepped out into a new world. And my friends, as I opened myself to the world, the doors of the world opened for me. From the trauma in my family to deeply studying various non-invasive therapies, all these paths led me to my gurus, and I have had many. This combined with the support from my family accelerated my stepping out into the new world. In fact, my late husband, who had initially resisted me working for the cause, was instrumental in starting my new life. We established my trust, which is the Society for Complementary Therapies, a not-for-profit mental health and healing center here in Gurgaon. It is with his inspiration and guidance that now I take this movement forward,
reaching to the individuals who are struggling within. He left me with the baton, and very happily so, I must say. Friends, I feel that my life is finally fulfilled. My best reward till today is when I see a smile on a face that was once suffering, knowing they fought the resistance, cultivated resilience to live, and experience life in its joyful element. Friends, having figures in life who help us grow, motivates us, inspires us, is essential. But it is also true that in life sometimes you have to be that figure of motivation, inspiration to yourself, which in itself can be a struggle, like it was in my case, but yet beautifully empowering. So to all the women out there, I urge you to take the first step to get out of your shell and break the glass ceiling. That is the gender barriers often inflicted on us. We are the change and we need to bring it. On 8th of March, Women International Day, I appeal to you to embrace life, to embrace freedom, and pledge to address mental health. We need to nip the issue in the bud and not brush it under the carpet. Breaking barriers that hold us back, starting from the confines of home, and remove any stigma, recognizing, accepting, educating, and taking positive actions to resolve it. And finally, I would like to emphasize that to achieve your passion, there are 3 prerequisites. The first is the desire to get out of your comfort zone. The second, the willingness to explore and try your hand at things that may lead you down that path that you have chosen for yourself. And lastly, seeking role models who motivate us, help us cultivate the strength that lies within us. So take this forward with you. Embrace the challenges that come and fight with Shakti, that is you. Because believe me, when I say this, the challenge ahead of you is never greater than the strength that lies within you, my friends. Roosevelt once said, a woman is like a tea bag. You can't tell how strong she is until you put her in hot water. Is that true? Isn't it true? I'm sure all of you will agree with me. And once again, I need to thank you for your patience and listening to me. Thank you so much, Meena ji. That was very inspiring. And I think you touched upon a very important, pertinent subject of mental health that we all go through, and we at Rex Karam, we have been talking about that, during the pandemic, the mental health issue, and especially concerning women and children and young people, came out more apparently and out. It showed its ugly face. And we need to have acceptance. And I always say respect and I accept the way you are, because like we have issues with various parts of the body, the mind will have issues, and the life is challenging. So mind also gets challenged. Let's de-taboo mental health and accept it like any other physical, mental issues that we may have. Thank you so much for bringing light in there and, taking it as your life mission and bringing awareness in people's lives, because you went through it very closely with someone in your family. Thank you so much. From there, we move on to Meena. And Meena, you could please come on to the screen. Meena, आप screen पे आ जाइए.
मीना आप स्क्रीन पे आ जाइए, अब आपकी बारी है। सो मीना इज अ वेरी रेजिलियंट सोल, बहुत ही रेजिलियंट सोल है, और इनकी कहानी से हम बहुत प्रेरित होने वाले हैं, सुनने वाले बहुत प्रेरित होने वाले हैं, क्योंकि इनकी कहानी बहुत सटीक और सीधी है, और हर वुमन को, हर औरत को इससे गुजरना पड़ता है। You know, the strata of your life, the status has nothing to do with what women go through. Before we start, Meena, there are some people who are trying to join in the Zoom link. Please ask your friends to join in on the live. I've shared the live with all of you on the group, so please help your friends to share on the live. Over to you, Meena. अब आप, माइक आपके लिए, स्क्रीन आपके लिए, ओवर टू यू, आपका टाइम शुरू होता है अब। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मीना है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरा अब तक का सफर और मेरी लाइफ बहुत ही कठिन थी। अब तक का उतार चढ़ाव जो भी मेरी लाइफ में हुआ वो काफी कठिन था। जब मैं छोटी थी स्कूल टाइम पे, तो मेरी रुचि स्पोर्ट्स में ज्यादा थी। तो मेरे को स्पोर्ट लाइन में भी मैं गई और मैंने नेशनल भी खेला और मैं एथलेटिक्स चैंपियन भी थी। और धीरे धीरे मैं गेम भी खेलती रही, पढ़ाई भी करती रही। और जब कुछ और बड़ी हो गई, 18 प्लस कोर्स क्रॉस किया मैंने, 21 साल की एज में आई, तो शादी की बातें होने लगी और फिर मेरी शादी हो गई। और अब तक मेरे माता पिता ने बहुत अच्छी तरीके से मेरी परवरिश करी और मेरे लिए लड़का देखा और शादी करी। शादी करने के बाद में वो लोग मुझसे खुश नहीं थे और मुझे पसंद नहीं कर रहे थे। हालांकि उन्होंने देख के किया, सब कुछ किया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मेरे को परेशानियां वो लोग देते रहे। मेरे को इतनी परेशानियां देने लग गए कि मेरे को थोड़ी मेंटली टॉर्चर करने लगा, काम ज्यादा से ज्यादा देना। और हस्बैंड ड्रिंक मैन, वो ड्रिंक करते थे, तो वो भी मेरे फेवर में नहीं रहते थे, कभी प्यार से बोलते भी नहीं थे। और मुझे नहीं पता कि उस घर में भी मेरा कोई अपना था। मेरा कोई सपोर्ट नहीं मिला जरा सा भी, ना ही मेरे हस्बैंड से और ना ही मेरे ससुराल वालों से। तो काफी लंबा सफर चलता रहा ऐसी, काफी पर डे डेली टॉर्चर वगैरह ऐसे करते रहे। तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरा तो और कोई है भी नहीं, शादी हो गई, मैं आपके घर में हूँ। तो नहीं, कहा उन्होंने, जी मीना आपको जाना पड़ेगा, और आप लड़के के साथ में कोई बात नहीं, ये आपका घर है, आप जब मर्जी आते रहना। तो जैसे जैसे करके शादी भी हुई, मेरी विदाई हो गई। होने के बाद में मुझे भेजा, मेरे को लेने नहीं आते थे। 9 9 महीने और 10 10 महीने रह जाते थे। तो जैसे तैसे दिन बीतता रहा और कठिनाई झेलती रही, दुख भी पड़ते रहे, चुप रहती थी, कहती किसी से नहीं थी। और फिर मेरे को 3 साल में मेरा बेबी हुआ। बेबी होने पे 5 महीने पेट में मेरा बेबी था, छठे महीने में उन्होंने बोला आप जाइए, आपकी डिलीवरी होती है और उसके बाद में आप आ जाइए। तो मेरा बेबी हुआ। डिलीवरी के दौरान तो मेरी फैमिली से कोई भी नहीं आया, और जब मेरी फैमिली से कोई नहीं आया, 5 महीने का मेरा बेबी हो गया। बेबी होने के बाद में मैं फिर अपने ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद में फिर वही पुरानी बातें, काफी मेंटली टॉर्चर करना, और हस्बैंड भी सपोर्ट में नहीं रहना। अभी मैं बोल भी दूं तो उन्हीं के फेवर में, मेरे फेवर में जरा सा भी नहीं, तिल तिल के मरना, और हर चीज से प्रॉब्लम रखना मुझको। तो ऐसे ऐसे करके जब 2014 साल आया, 2014, तो मेरे को दूसरा बेबी मेरे पेट में 3 महीने का था, और उन्होंने ये प्लानिंग करी कि इनको, अभी तो ये नहीं गए, 7 साल हो गया अभी नहीं गए, इनको कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने ऐसे निकाला, एक प्लेन पेज पे ये लिखते हैं, मेरे सास ससुर देवर नंद, इनसे मेरे को जान माल का खतरा है। ये पर्चा मेरे सामने लाते हैं और मेरे हस्बैंड से साइन कराते हैं, और मैं साइन नहीं करती, हस्बैंड मेरा साइन कर देते हैं और मैं नहीं करती। मैंने कहा मैं नहीं साइन करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वो वो 7 व्यक्ति थे और मैं अकेली जान, और मैं उस समय इतना टूट चुकी थी, शायद मेरे पैरों तले जमीन खसक चुकी थी, है ही नहीं थी।
फिर भी मुझसे साइन कराया और मैं बहुत रोई, इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती कि सामने एक डेड बॉडी रखी हो और किसी का कोई अपना मर जाए तो वो फूट फूट के रोता है, तो मैं क्या करूं। फिर भी मैं रोती रही। 2014 15 अप्रैल को मैंने घर छोड़ दिया। मैं 2 साल अपने हस्बैंड के साथ रही, उन्होंने मेरे साथ 2 साल रहे और मेरे पापा डेथ कर गए गाँव में। मैं वहाँ पे अपने पापा के पास गई, वहाँ जाने के बाद में मेरी फैमिली से कोई भी नहीं जाता से, और 13वीं हो गई, 14-15 तारीख तक मैं वापसी आई। तो मैंने पूछा कहाँ पे हो, तो उन्होंने बोला मैं सब सामान लेके मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ पे आ गई। तो मैंने कहा जब ठीक है, 2 साल से हम साथ में रह रहे थे, अब साथ में रहेंगे। तो कहने लगे अपने अ, आप मम्मी पापा से बात करना। जब मैंने उनसे बात किया तो मेरे ससुर जी मुझे गाली देते हैं और मेरी सास मुझे गाली देती है और ननंदे मुझसे फोन पे मुंहजोड़ी करना चालू हो जाता है। तो मैं उस समय अपने 3rd फ्लोर पे बैठ के और मैं चिंगाड़ चिंगाड़ के मैं रो रही थी कि ये हो क्या गया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा सिवाय 2 बच्चों के। अब उसके बाद में धीरे-धीरे फ़ोन की दूरियाँ भी ब कम हो गई, धीरे-धीरे बात करना भी बंद हो गया। अब किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, बिल्कुल खत्म। अब उसके बाद में मैंने 1 साल इंतज़ार किया, 1 साल इंतज़ार करने के लिए मुझे कई लोग ये बोले, "कहीं काम करो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, कुछ भी ए टू ज़ेड कुछ भी काम मिलता है तुम काम कर लो।" तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना मैं ड्राइविंग करूँ। और औरों से ही पूछा तो कह रहे हैं ठीक है करो। तो जब मैं जाने लगी तो जो मेरा माहौल है वो मुझे कमेंट करने लगे, ये तेरे बस की नहीं है, ये मत करना, और तुम सिलाई बुनाई का कढ़ाई कर लो, कुछ पैकिंग का काम कर लो, बच्चे पाल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर लो। म- मैंने किसी की बात ना मानी और मैंने ड्राइविंग का कोर्स 3 महीने में किया। उसमें मैंने कुछ जेंडर की क्लासें ली, कुछ कम्युनिकेशन की क्लासें ली, थोड़ा कुछ स्पीकिंग कोर्स की भी मैंने क्लासें ली। वो सब क्लासें लेने के बाद में मैं ड्राइविंग करती रही। मैं आज वुमेन कैब ड्राइवर हूँ। और इसी दौरान मेरे को एक बार मेरे पेट में पेन होता है और अचानक ही मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल में चली जाती हूँ। मेरे ओवरियन सिस्ट था, राइट साइड में ओवरियन सिस्ट। तो डॉक्टर ने देखा इमरजेंसी में, उन्होंने बोला कि इनके तो ऑपरेशन होना है। तो कहा घर से किसी को बुलाओ। तो वहां पे जो भी सिस्टर वगैरह थी मेरी, तो उन्होंने कहा घर से तो कोई नहीं, हम ही हैं जो भी गार्जियन इनके बनते हैं, कह रहे और भी उनकी फैमिली में हस्बैंड कोई भी। तो मना किया कि नहीं है। उनके उनके बाद में मेरे को उस डॉक्टरनी को मैं थैंक यू कहती हूँ, जो उनको ब्लड चाहिए था, जो मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उन्होंने खुद ब्लड मुझे प्रोवाइड किया और ये कहा कि इनको 3 दिन हो गया एडमिट हुए, प्लीज इनका बच्चा, 2 बच्चे ये घर छोड़ के आए हैं, इनका ऑपरेशन जल्द किया जाए और इनको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाए। उस दौरान भी कोई भी नहीं आता है। उसके बाद में मैं फिर खड़ी हुई, दोबारा खड़ी हुई, फिर काम करने लग गई। और जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी उस दौरान भी मेरे को बहुत से लोग मतलब तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं कर पाओगी। मैं काफी इस तरीके से परेशान हो गई, फिर भी मैंने वो चीज छोड़ा नहीं। और आज के टाइम पे मैं अब मिनी बस चलाती हूँ और मैं ट्रक भी चला लेती हूँ, जेसीबी भी चला लेती हूँ और टाटा 407 भी चलाती हूँ। और जो मेरा जो सपना है वो आगे मेरा डीटीसी बस चलाने का मेरा सपना है। और ये इस दौरान में जब भी फील्ड पे रहती हूँ, जो पहले डर था, जो बहुत डरती थी, यार मुझे कोई कुछ बोल ना दे, कुछ कहना दे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ हमें पढ़ाया और सिखाया जाता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं। आप मैं हर किसी को कहती हूँ कि आप अपनी पहचान किसी आदमी से ना करें, आप अपनी पहचान खुद से करें। और अब आज मेरा यही मकसद है कि किसी भी मैं लेडीज को भी देखती हूँ और उसको मैं हमेशा बोलती हूँ डरना कभी नहीं है, कुछ भी नहीं, इनका काम है डराना, हम इनको फेस करेंगे और हमसे बढ़कर कोई नहीं है। तो काफी लंबी स्टोरी है मेरी और बहुत परेशान रही अपने लाइफ में। आज मैं खुश हूँ, अपने बच्चों से लेके मैं अपनी
इज्जत वाली जिंदगी जीना चाहती हूँ, अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों को देना चाहती हूँ और अच्छी जॉब देना चाहती हूँ अपने बच्चों को मैं। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी ड्यूटी ऐसी चलती रहे अच्छे से। और गॉड से मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पे ना खड़े हो जाए, प्रभु मेरे को कुछ भी मत होने देना। थैंक यू सो मच मीना। मैं आपकी कहानी बहुत संक्षेप में इंग्लिश में बताऊंगी सबको, because there are a lot of people who are listening in from around the globe with us and who've joined us on the Facebook. Please go ahead and share this live with your friends and family so that more and more people can know the stories from across the globe about these women champions of change who are leading by example. So Meena got married at a very young age and was not accepted by her family, by her husband, and was thrown out of the house with her second child when she was pregnant with 3 months and the second pregnancy. But thereafter, she led herself into doing what she thought she could do the best. She became a professional cab driver, learned driving, and now she drives a 16-seater bus. She can also drive truck, she can drive buses, she can drive any vehicle. So this is to say that never say never, and that's the spirit. She did not give up. So आपकी spirit से हम learn करते हैं मीना, that unbreakable, unshakable, unstoppable. So all the very best to you. अगर आप कर सकते हो तो आपकी story से हम सबको प्रेरणा मिलती है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, कैसे भी circumstances हो उनसे बाहर निकल सकता है. Each one of you is right here as our moJOsh Magnificent 7 are inspiring the world that if I can do it, you can do it too. Thank you so much, Meena. With that, we move on to our next speaker. And I'd like to tell the audience, sorry for the technical glitch that we had today. We had to come on live again. So the next speaker with us is Namrata. She's from Jaipur. She's going to talk about her struggle with her fears, with her mindset, with her upbringing, and how she's coming out of that in her life. Over to you, Namrata. Thank you, Itu. Very good evening to all of you. I am Namrata, as introduced by Itu. So I'll take you to my journey starting from childhood. I was a very introvert girl, having this strong male fear developed in me. It started developing through some, to the movies which we were having in the home when Mama was not around, as she was working also. तो वो डेवलप होने लगा फियर, बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होने लगा. दीदी वॉज वो ठीक थी, पर मैं डरी भी थी, बहुत डरी थी. और ये एक बहुत बड़ा टैबू बनते जा रहा था मेरे लिए कि भाई ये क्या होते हैं मेल, मतलब क्यों इनसे हमें डर लगता है. वो सिक्योरिटी फीलिंग नहीं आ रही थी कहीं भी. उसके अलावा प्यूबर्टी, मैं सीधा अभी प्यूबर्टी पे चले जाती हूँ. प्यूबर्टी में मुझे मोलेस्टेशन भी हुआ. प्यूबर्टी भी नहीं थी, वो तो बड़ी हो गई थी, मतलब इन माय 20s आई गेस, 21 में भी ऑफिस में हुआ. और तब मुझे और ये फियर आ गया कि भाई आदमी लोग तो खाई जाते हैं. तो अब अंदर से ये जो फीलिंग थी कि एक तो मेल फियर, अभी सेक्स को लेके भी इतना हो गया था कि भाई ये तो घिनौनी हरकत है और आदमी ये इसी के लिए घूम रहे हैं आसपास. फिर मैं बड़ी मतलब 26 साल की हो गई, मतलब 24 की हो गई थी. मेरे शादी वादी की भी बातें चल रही थी. तो मैं शादी से तो कभी करना ही नहीं चाहती थी, कि मुझे पता है कि शादी का मतलब है सेक्स होना, और मुझे इससे डर था. बहुत अलग ही नोशन थे इसको लेके, टाबू था इसको लेकर के. तो मैंने सोच लिया था शादी नहीं करनी. लेकिन उसी दौरान मैं ये जानती थी कि मैं एक बंदे को ऐसे जानती हूँ जिनके साथ मैं पढ़ी हूँ, जिनकी आंखों में मुझे रेपिस्ट नहीं दिखता, और वो मुझे सेफ रखेंगे. क्योंकि हर लड़की का सपना है कि वो घर बसाए, और हर इंडियन लड़की, बाहर की लड़की सभी का होता है कि घर बसाए और अपनी फैमिली को बढ़ाए आगे. और वो प्रोसेस सेक्सी होता है जिसके थ्रू आप करते हो, लेकिन ठीक है, सपना तो है, आप अडॉप्ट भी कर सकते हो. खैर, तो अभी हस्बैंड जो मेरे, जिनको मैं चाहती थी, मुदित नाम है उनका, तो मैंने अपने पापा को बताया कि मुझे इनसे ही शादी करनी है क्योंकि ये मेरे लिए परफेक्ट है.
हम दोनों में, हम पढ़ते थे, उसके बाद 2 महीने बाद से तो कोई हमारे में कम्युनिकेशन था ही नहीं, हम 2 साल से मिले भी नहीं थे। और उन्होंने मुझे एक बार शादी में दीदी की इस तरह से देखा था घूर के, मैं बहुत अच्छी लग रही थी कि मुझे लगा ये भी वो रेपिस्ट है, तो मैं दूर ही हो गई उनसे। मैंने कहा नहीं पापा, यहाँ पे भी संभल जाओ अपन तो उसके बाद मुझे पर पता नहीं क्यों वो फीलिंग आई स्ट्रॉन्ग कि नहीं, वो बंदा ऐसा नहीं है, तो वो सेफ रखेगा मुझे। तो पापा से बात हुई, पापा ने उनको बताया, ठीक है हम शादी हुई हमारी, सब कुछ हो गया बढ़िया वाला। और मुझे तो मैंने सब बताया था, मेरा जो मोलेस्टेशन हुआ, मेरे मेल फियर्स है, ये है वो है, वी वर लाइक गुड बडी। जिन्होंने अपनी बातों को, उन्होंने इतने इतने ओपन माइंडेड थे वो भी, जिन्होंने मेरी बातों को सुना, वी वर एक्चुअली गुड बडी। तो वेरी थैंकफुल कि ऐसे इंसान की मैं वाइफ हूँ, यस, और गर्लफ्रेंड की, यस। तो अभी हमने शादी कर ली, सब हो गया। घर पे हम जब फर्स्ट डे ही था हमारा इन लॉज के साथ में, तो वो बैठा ही नहीं हिसाब किताब। मतलब आई यूज्ड टू विजिट हिज प्लेस, पढ़ते थे तो बहुत प्यार से वो सब लोग मुझे बिटिया 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 कहते थे, तो मुझे वो बहुत अपीलिंग लगता था, क्योंकि मम्मा जॉब करते थे तो मुझे वो सराउंडिंग मिलती थी, वो अफेक्शन वार्मथ मिलती थी। तो वो एक बहुत बड़ा कारण था, मैं अपनी मदर इन लॉ को चाहती थी, तो शायद शादी करने का ये एक रीजन वैसे ज्यादा बड़ा था। खैर, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये चीजें बिल्कुल ही खत्म हो गई। अभी बड़ी फाइट्स हो जाती थी, कुछ भी इश्यूज चालू होते थे, बहुत अगली मोड़ पे जाते थे, क्रूएलिटी दिखती थी मुझे। तो मुझे लगा कि यहाँ तो सर्वाइवल नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड अलग हुए, मैं कहाँ भी गया अलग होने, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे, सर्वाइवल के लिए हमें अलग ही होना पड़ा। फिर अभी हम अपनी नई दुनिया बसा रहे थे, तो अभी इधर हम दोनों में अब फाइट चालू हो गई। कुछ भी इशू होते थे तो वो कभी इतने बड़े मतलब बड़ा बड़ा हम माने तो इशू बड़ा है, नहीं तो छोटा है। तो फाइट्स के दौरान फिर मैं भी अपनी बात पूरी कहती थी। मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, मैं इनजस्टिस नहीं सह सकती, मैं गलत को नहीं होते देखना चाहती, और गलत अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे बताओ ना कहाँ मेरी गलती हुई है। छोटी छोटी गलतियों को हम अगर लाइफ में बहुत बड़ा बना रहे हैं तो हमें वी नीड टू चेक कि हम सही कर रहे हैं क्या। इंसान है हम, इट्स ए टू ह्यूमन कहते हैं ना, तो भाई गलती हुई है, ठीक है बता दो, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो अभी इनका क्या हुआ कि ये मुझे मारने लगे। अब यहाँ पे मेरी एक और जो एक, पहले तो मेरा बचपन का डर, फिर वो मोलेस्टेशन का, भाई आदमी ये ऐसे होते हैं। अभी यहाँ पे मैं जिस आदमी के साथ मेरा जो रक्षक है, जो मेरे हस्बैंड है, जो मेरे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड थे, अभी वो मेरे को मुझे मार रहे हैं अगर, तो मेरा तो अंदर से, और मैं टूट गई कि यार ये क्या हो गया। अभी मुझे तो पापा ने कभी नहीं मारा, पापा वो सो सॉफ्ट, कभी पापा ने फाउल लैंग्वेज यूज नहीं की। अब मेरे जो हस्बैंड है, उन्होंने वो जो, उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने एक्चुअली में अपना जो चाइल्डहुड जिया ना, ये सब चाइल्डहुड चीजें होती है जो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। मैं बोलना चाहूंगी सभी लोगों को जो सुन रहे हैं कि हमको अपने बच्चों को अच्छा चाइल्डहुड देना है, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी, हम 43 42, हम लोग इतनी गलत अपब्रिंगिंग, आई एम सॉरी, मैं पेरेंट्स को कुछ नहीं कह रही हूँ, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, पर हम सोसाइटी की जो सराउंडिंग से जो हम सीख लेते हैं ना, तो वो हमको बहुत अफेक्ट करता है पर्सनालिटी वाइज। हमारी स्प्लिट पर्सनालिटी भी हो जाती है, बहुत अलग अलग चीजें होती है, आपको समझना पड़ेगा और सुधारना पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे मुझे जब उनका पॉइंट आता था कि ये नहीं हुआ तो उन्होंने मार दिया, और मुझे लगता था कि मार कैसे सकते हैं, मुझे तो मारना ये चीज सही नहीं लगती थी, तो मैं अगेंस्ट थी इसके। मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखता था मैं किसको बोलूं, क्योंकि जहां मैं मम्मी पापा को बोलती थी तो वो समझ नहीं चाहते थे। पहली बात उनको विश्वास ही नहीं होता था, मुझे ही विश्वास नहीं हुआ, मुझे कैसे एड कर सकते हैं। मुझे वॉज अ वेरी नाइस बंदा, ही स्टिल इज अ नाइस बंदा, यस ही इज अ नाइस बंदा, आई नो। बट कुछ चीजें हुई हैं इंसानों में ही, जैसे भगवान बसता है वैसे इंसानों में शैतान भी बसता है। आई बिलीव इन दिस। मैं नहीं जानती भगवान और कहाँ है, मुझे पता है इंसानों में है, मुझ में है, मेरे आसपास के कई लोगों में है, और शैतान भी हम में है। सो नाउ वी नीड टू चेक अपॉन इट। तो अभी क्या हुआ कि मुझे मैंने इनको बोला कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही। मम्मी पापा को बोलने से वो कहते थे कि भाई सह लो रह लो, मुझे को समझा देते थे, वो भी समझ जाते थे कि नहीं उनसे गलती हुई है, मानते भी थे अपनी गलती हुई है। आज वो अभी नेक्स्ट रूम में बैठे हैं, उनको पता है मैं लाइव बोलने वाली हूँ, ये सब बोल रही हूँ, वो सुन रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई है। और वही असली आदमी तो वही है, मैन तो वही कि और वुमेन भी वही है जो अपनी गलती को पहचान ले और उससे निकल के आए और कहे कि हाँ भाई गलती हो गई। परिस्थितियों ने, समाज सबसे बड़ी तो समाज हमारे लिए ये सब परिस्थिति क्रिएट करता है। तो उससे भी लड़के अगर आप उठते हो और कुछ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस आज जो आप अपनी पेश कर रहे हो, चाहे मैं पेश करूँ, चाहे मुझे पेश करें, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टोरीज हैं, यू कम आउट विद इट। और फिर मुझे नहीं मालूम मेरा कितना टाइम, आई एम सॉरी। तो अभी हम ये हुआ कि फाइट बहुत बढ़ने लगी, तो बढ़ने लगी तो इतनी
इतनी बढ़ने लगी कि हर दिन हो जाती थी, और बच्चे भी झेलने लग गए, बच्चे भी हो गए यहाँ पे, और बच्चे मुझे चाहिए थे, तो आई हैड टू अंडरगो द प्रोसेस. ही टोल्ड मी द प्रोसेस, बहुत अच्छे से बताया. ही हैज नेवर डन अ मैरिटल रेप. थैंकफुली आई गॉट अ गुड हस्बैंड. यस, हैट्स ऑफ टू हिम. और अभी यहाँ पे बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे भी लड़ाई देख रहे हैं. तो एक गंदी सी पिक्चर बच्चों के मन में आ रही है, ये मम्मी पापा करते क्या, रोज लड़ाई करते, रोज लड़ाई करते, रोज यहाँ पे मारा पीटी भी हो रही है. तो बच्चे किस अनसेफ जोन में जाते हैं. मैं तो जा ही रही थी, बच्चे भी जा रहे थे. तो यहाँ पे मैं सोसाइटी की एक बहुत बड़ी क्वेश्चनिंग करना चाहती हूँ. आपके कारण, ये जो सोसाइटी आप सुन रहे हो ना, आपके कारण हम इस रिश्ते में हमें बंधे रहना पड़ा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी कहती है एक बार आपने जो कमिटमेंट कर दी, आपने जो डिसीजन ले लिया, अरे डिसीजन हमने 20s में लिया था, ठीक है यार, वो गलत साबित हो गया होगा, हो गया, ठीक है. तो अभी उसके लिए हमें क्या सजा देते हो आपकी, आप जिंदगी भर इसको झेलो, उसको निभाओ, अर्थी भी उठे तो भी करो. और ये सिचुएशन हुई थी लास्टली जब दिसंबर में उन्होंने मुझे हिट कर दिया कि बच्चों को सोने दो. मैंने कहा नहीं सोना, मतलब बच्चों को उठा दो. मैंने कहा नहीं उठाना, सोने दो. तो उन्होंने मुझे इस तरह हिट कर दिया अपने गुस्से में. आपा नहीं था उनका, वो खो चुके थे आपा, कि मेरे को ब्लीडिंग होने लग गई थी सर से. मी बीइंग अ डिप्रेशन पेशेंट फ्रॉम 24 years, और मुझे ब्लीडिंग हो रही है. वो भी उस समय वो रोने लग गए, ये मुझसे क्या हो गया, तुम पुलिस में दे दो. और बच्चे भी डर गए, पापा पापा ये क्या करा आपने. बट वो मोमेंट एक सेकंड में खत्म होता था सब. मैं ब्लीडिंग ज्यादा होकर मर सकती थी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी. उधर इनकी पोजीशन खराब हो सकती थी. पूरा चैप्टर ही लाइफ स्टोरी हमारी, जो एक हमने पिक्चर बनानी चाहिए थी ना, एक मुदित और नम्रता की लव स्टोरी, वो ऐसे मोमेंट पे आके क्लाइमेक्स पे जाते एंड हो जाती, जहाँ कुछ भी नहीं बचता. मैं मेरी सीए की बैठक हो जाती, मेरे हस्बैंड का कुछ होता ही होता, ऑब्वियसली होता. तो और यहाँ पे मेरे 2 बच्चों का क्या होता, कोई जवाब देगा, कोई जवाब है नहीं ना आपके पास. आप तो सोसाइटी बनते हो, आप तो बस बड़े बड़े वो जब बेंचमार्क्स बनाए जाओ कि यार आप, ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. बच्चे भी तो, बच्चों को फ्रीडम क्यों नहीं दे सकते हम. मैं यहाँ पे इतना सा बोलना चाहती हूँ, बच्चे कभी कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो हम उनको वो फ्रीडम नहीं देना चाहते कि एक बार उन्होंने जो ले लिया सब्जेक्ट, कभी उसको कंटिन्यू करना है उनको लाइफ लॉन्ग. अरे हम पेरेंट्स नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा. ऐसे ही हमारे पेरेंट्स नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा. आज भी मुझ में बच्चा बचता है, मुझे में बच्चा बचता है, मेरे बच्चों में बच्चा बचता है. तो हम क्या क्या एकदम मतलब क्यों इतना रफ बना देना चाहते हैं लाइफ को. जीने दो यार, हमें जीने दो. हम चारों अगर किसी चीज में खुश है ना, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप हमारी लाइफ में डंडा करने आओ. तो कभी संभालने आए क्या, मैं पिट रही होती थी, आसपास के लोग कभी आए थे क्या, रिलेटिव तो जानते थे ना, कभी आए थे क्या आप, क्योंकि आपके अंदर वो समाज को लेकर डर था. क्या डर था कि नहीं हमारी बिटिया ये स्टेप ले लेगी डिवोर्स का तो गलत हो जाएगा, और हमारी जमाई की पिक्चर बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगा. तो आज क्या हो रहा है, अभी मेरा अगर न्यूज में हेडलाइंस में आ जाता मैं मर गई, मेरे हस्बैंड तो बिहाइंड द बार्स होते, तभी क्या होता, सबको फुल एक्सपोजर होता ही ना. और कितनी गंदी पिक्चर होती वो. सो नाउ दिस इज माई स्टोरी, आई वॉन्ट टू एंड दिस स्टोरी. क्लाइमेक्स जो मेरी पिक्चर का होगा ना, वो मैं बनाऊंगी, आप नहीं बनाओगे. मेरी पिक्चर का क्लाइमेक्स ये होगा कि मैं बहुत अच्छे से वॉकआउट करूंगी. मतलब ये सफोकेटेड रिलेशनशिप बन गया है, 17 साल से इसको झेलते हुए, संभालते हुए. बच्चे भी घुट रहे, कह रहे मम्मी पापा आपका क्या सीन है. तो और मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको मैं पढ़ाई के लिए स्पेस नहीं दे पा रही हूँ. ये सब मैं बैड मम्मा कि मैं अभी अपनी फाइट के लिए लड़ रही हूँ. पर इससे भी बुरी पिक्चर हम कर सकते हैं अभी, अगर हम इस रिलेशनशिप में और रहेंगे तो. पता नहीं जिंदा भी रहेंगे कि नहीं. तो ना अगर मेरी जिंदगी की बात है. Thank you so much, Namrata. Thank you so much for your brave story, and thank you so much for sharing the truth of your life. You touched upon very important points of domestic violence. You also touched upon very patriarchal mindset जो हमें break करना है. You also touched upon marital rape, which you are very blessed that it's not happening. And these are things that we at Rex Karamir have been talking about. And we need to change the mindsets. जब mindsets change होंगे तभी society भी change होगी. And we at Rex Karamir believe I change to change the world, I change to change the society, I change to change everything, because the change lies within me. When I shift and change, then I can also see the change that is happening around me. So thank you so much for such a brave story, and all the best. May you take the right decision for yourself, for your children, and for your family, because you took this decision that you want to talk
in this live today about domestic violence, about mindsets in the people that a girl, when she's not happy, a woman, if she's not happy, she should have the courage and she should be allowed to break away and find her happiness if she's not able to adjust. And because it takes a family to raise everyone, it takes everyone, it takes a village to raise a child. In the similar manner, there is a lot of things that happen in a family or in a marriage also. There are external factors. A lot goes into playing, into making a marriage work. So all the best to you. Take care of yourself, and we are here. If we can help you in any way, we can support you. We are here for your depression, for your finding ways through. We are here. And thank you so much for that courageous story. With that, we move on to our last story, but it's again a very powerful story of Sunita, and let's hear it from her. Over to you, Sunita. Hi everyone, I'm so humbled by the journeys I've heard so far. Thanks so much for sharing. And here's mine. Amazed at the life and its adventure, like always. I want to say I'm not what happened to me. I am who I choose to be. Humbled by the ways of life and learning from all those around me, I, Sunita Athenis, ardently believe in love, the universe, and being real. I identify myself as a healer, graduated in physiotherapy, and practice helping in people in little ways that I could, like, not the grand ways, but then saving someone from a simple depression and being in the journey throughout so they feel better in little ways like that. Maybe I can't give you any numbers or any organization names, but then being there is all that I could do. So it's all about energy, and I go with the flow of it. And I care a very little thing about what the world around me thinks or what it feels about me. So I think that helped me to be who I am. So yeah, one is well known for one's sparkling dark cold eyes and infectious smile that brightens everyone's day, and an aura that is wondrous and lasting. So one wakes up to realize that the face the world knows is lost forever. So I'm here to tell my story about my survival and recovery to becoming a rejuvenated new me again with a new face, better me. On August 27, 2011, I think it was around afternoon, my friends and I to have a quick lunch. I hadn't traveled much, and then I was excited about the idea of lunch up the hill. It was an exciting view from where I screened out of a French window saying, how did I miss traveling where I felt this is a beauty at its best? I felt very comfortable on the way back in the rear seat of the car, where I had it all to myself. I kind of dozed off listening to music. Usually I sit in the navigator's seat so that I learn the roads and give company to the driver. And I'm very cheerful and talkative, even on like a tired log. So when the sun went down and it got darker, I had slept off listening to some songs on my laptop. There was a deep thud. A few seconds later, I was on and off with a lot of chaos around me. I kept breathing, figuring out what happened, but actually I was not able to figure out. So whenever I could, I heard my friend beg, saying, don't die on me. It is okay, keep breathing. I was trying to focus on that voice. I was sure something bad had, and I could not figure out. So I did not have the energy to look into what happened as well. So I was trying to just focus on breathing. There was this very deep, calm peace, and I felt very, very close to that place. And I had accepted it. And it was almost like a very blank space. And then I saw masters, ancestors, the bright light that we see in the movie and all maybe. And somehow I felt very quiet and contented and happy there. But then again, back to my senses, a lot of warm blood, tears. I can sense the urgency to keep me alive. And I was pulled, carried, pushed. My body was turning, trying to breathe. All I knew was I was alive and I was trying to be that way.
Somewhere I was sobbing to express my heartfelt apologies to my family for abandoning them, hoping to say goodbye. I wanted that last hug, and I was sorry for everything that I missed. It was around midnight when I was brought into my hospital. There was hardly any chance for life. I was rushed into OT, clean to find some face to fix. Whenever I came to my senses, I could hear the doctors asking questions, and like always, I desperately wanted to answer, but then I could not stop struggling to do my thing with my hands and fingers. Little did I realize that, my face was like, it was totally smashed. For starters, signing thumbs out, saying I'm okay, and I don't remember much. From there, I went into a deep nightmare, which was followed by a series of intense hallucinations. I can't tell you how long they lasted. I was thankful somehow that, I knew that the universe got me to the right place and the right people, and I would be okay. So what happened was that on that fateful minute, that evening, was a really bad accident. My friend who was driving sat off for a second, and the friend next to him was trying to grab the screen, steering in a panic mode. The car all tries, and I was in this deep sleep. My face was at the open window, dragging along the road for a few meters, till I fell into a low place on the road, on the highway. Two jaws, all that they found, were handed over to the doctors, hoping to see me back soon. I was not in my senses, but the hallucinations were like kind of entertaining at times, and sometimes it gave me chills down my spine. It was something like, that went into my subconscious even before I was born. Some things like that. So that was the toughest part of recovery. But then it was the beginning of getting back. Every time a series of those episodes ended, I felt there was a reality outside that. I felt a deep sense of gratitude for being brought back to life. I was happy to know I was alive. I was even more overjoyed to know my mom and sis were nearby, my friends. My sister stood as the strongest pillar of support for my comeback. I was entrusted with a hardworking team of innovative doctors. It seemed like I was a part of their team, working beside them on me sometime. After about 3 weeks, I got hold of reality. Slowly, the medications were wearing off. Slowly, the fear of hallucinations disappeared, and there were just anchoring points to connect to reality. I had a visual of me working on my scar, and then that was a sign. My eyes were shut and sealed with the gauze for a long time. My senses of hearing sharpened, and I could listen to almost everything before anyone else could get to it. That part of life, looking forward to seeing the light, was a timeline goal. It is a blessing that I see with both my eyes. I had a fake tube for feeding, and one day when I was taken to the OT for a major surgery where they removed a bone from my leg to construct my jaw, there are many implants and all that stuff. I got a glimpse of myself on the elevator reflection. And there I had a moment, a very blank one. I could not feel anything. Then I had to accept. Then came acceptance for real. I already knew something was bad, and I learned that it was at its worst. I lost my face and I won't ever be able to see or feel it again. And yeah, so that was the point where I realized, okay, this is life. So my sister and I worked on getting back home at the earliest to heal at my pace. We kept away everyone and everything negative or infectious. So sadness and crying was not a part of the recovery. Even by chance, someone who comes with pity and sorry, I had to force myself to keep me away from such things. Motivating songs, prayers, and lessons from all around the world helped me to heal sooner. Friends visited to pep me up, cheer me up during my lows after the surgeries. I was full of gratitude once I learned to accept my confusions, anger, and hunger. I regained my senses, a healthy mind, a bolder and a stronger than ever me was made. After around 27 surgeries, they reconstructed my face. I have good eyes that see. I work actually. Even with some difficulties, I can see. I almost have the whole of my lips to smile. I can smile from all my heart. I have a nose to breathe and smell to the best of my abilities. I have a broken but still a functional mouth to eat with. Oh yes, and I eat a lot. I'm a foodie. After a long break from water and food, one will learn that the best part of life is food. I still have a voice like I used to have, and I can't stop talking, even if I lose my voice. And yeah, whoever has come to see me during those hospital days got me like books and pens and all that they can. And with all these surgeries and recoveries, a high school sweetheart who fell in love the moment he saw me at school got back and proposed to marry me when I was at my worst.
I am married to my darling husband, Jared, and we have 2 children, Apni and Atmik, and a puppy came along last year to celebrate life, and he is Joy. So friends is family and zillions of prayers and lots of love from all around the world. It keeps me celebrating me every day. I don't need a day as a Women's Day to celebrate. So you all must be wondering, how is it so rainbows and ice creams? And oh yes, I prefer it like this. And there are bitter moments you ignore and move on. A healthy way, obviously. Sort of, there's something that needs to be sorted. If it is worthy, it all goes with your gut. And that's all matters. 3 things to the world: let there be will to be you. So be you, be brave, and just read. So just read. When there is a difficulty, don't get lost in that pain. Accept it, acknowledge it, own it, and cross it in your own way. Find your own tricks, find your own clarity, and find your own way out. Not everything has a closure. So thanks much for the energy invested in listening here. Hope we learn and teach as we evolve. Happy Women's Day to everyone, and thanks again for being you. Let there be inclusiveness everywhere, and let there be divine magic. Keep smiling. Cheers. Thank you so much, Sunita, for that brilliant, brilliant story, told brilliantly and narrated wonderfully. Thank you so much. Thank you. We at Rex Karamveer say that, in life, no one is bereft of pain. Hardships and struggles, suffering, obstacles, grief, and adversity. We all have it. All of us break at some point or the other. But the idea, when broken, do you feel helpless? Do you give up? Do you break down? Or why some of you like you who persevere with their resilience and grit and break through. So thank you so much for each one of us, from each one of us at Rex Karamveer, for showing us that power of transformation. We talk of law of transformation. You have transformed your life so beautifully through the breakdowns that you are sitting here to inspire the world and tell the story that if I can do it, you can do it too. So here, once again, wishing everyone a great Women's Day. But as Sunita and everyone here said, that is not just today. We celebrate you, and we should celebrate ourselves each day and make the world a better place and leave a legacy of inspiration behind us. We're like you, each one of you is doing with the contribution that each one of you is making, because you're a contributor, teacher, guru, and a stalwart hero. Thank you so much, each one of you. Would you like to say anything as parting notes? Any one of you? Thank you so much, Itu, and the entire team of Rex for having me on this wonderful evening. Together, we are making an inclusive country, and it's always together we all can, break the bias. Thank you. Yes, and at Rex Karamveer, we have 2 very important slug lines that we say, that together as one, we can right every wrong. And that's exactly what you're doing. And the second is not just talks, but ideas for action. And each one of you is doing action, is doing the karma, is acting upon what they think is the right thing to do and bringing about a change. Anybody would like to say any last parting words? Thank you so much. It was a great pleasure to be here with you all. I think we should all connect together to work together. We all need to be a team. All of you are the Rex Karamveer global heroes now, and when we have the live event, our Rex Karamveer Global Fellowship is a live event. It's our flagship event, which hopefully, inshallah, we are saying that everything is going to be fine, and we are going to be seeing each one of you in person. We'll send you the formal invite for your nominations for the Rex Karamveer Global Fellowship. You are our heroes, and we would like to bring your stories to more and more people when we have the fellowship and the awards in person in November. 26th to 28th other days. So we will send you that as well. Anybody last words? Yes, for me, I want to say thank you. It's a great opportunity. And thanks, Rex. Thank you too. Thank you all my sisters from India. And
for giving me more sisters from Indians. And I hope one day I got to meet you guys one-on-one. Yes, very soon. Start planning, because in November you have to come down to India. Okay. Yes. Thank you, Itu, and thank you, everybody. It was a pleasure to meet everybody. And like Itu is saying, to meet you in person would be even a greater pleasure. Yes, absolutely. Thank you, Itu, for bringing us together. Yeah. Namaste. Namaste, and thank you so much. With that, we end our show. Have a beautiful evening, have a beautiful week, and keep inspiring and keep working towards making the world a better place. Bye-bye. Namaste. Bye. Thank you.